Now Raja is also one of the part of a team now, and he is trying to pull the carrot also. So Raja is pulling here Mini, and Mini is pulling here Tina, and Tina is pulling the Appu, and Appu is pulling the carrot. Okay, but work doesn't but काम यहाँ पे भी नहीं बना. Okay, so they didn't mix. So in the last option, Raja called his pet Pom Pom the monkey, and now he was also a part of in that game. So Pom Pom was a monkey is trying to pull out the carrot also. So here is like this. Pom Pom is pulling the Raja, Raja is pulling the Mini, Mini is pulling the Tina, Tina is pulling the Appu, and the Appu is pulling the carrot. So like this, now finally the carrot comes out, and they were so happy. They take that carrot to their home. They carry the carrot into their home. They gave that carrot to the grandmother to make halwa. Now grandma prepare the halwa for everyone, and they eat the carrot's halwa. No, I mean they eat that carrot halwa to share with everyone, and they also share the carrot halwa with each other. Okay, so now and all of them share that halwa. So this is the story, and this story ends here. What is the moral of the lesson here? Okay, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क. ओके, टीम वर्क से हम कुछ भी कर सकते हैं. आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब उंगलियां अलग हो तो वो कुछ नहीं कर सकती, बट वो जब बंध जाती है, मुट्ठी बन जाती है, तो वो अच्छे खासे लोगों का नाक तोड़ सकती हैं. उसमें एक यूनिटी आ जाती है. तो यूनिटी एंड टीम वर्क इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अगर कोई चीज़ आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा, मतलब उन्हें बोलो. शायद वो हो सकता है आप एक होकर कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो चार होकर बहुत कुछ कर सके आपके लिए. So this is the moral of the lesson. Okay, so this is the story, and I hope you have understood the story. And if you have any curiosity about this story, you can ask me, and you can watch this video again and again to understand the concept of the story. Now I will do do some exercises from this chapter. Okay, so here we have question number A. Okay, in this we have complete these sentences. Complete these sentences. Okay, complete these sentences. Now number 1, complete the sentences. So here we have to complete the sentence with given options. Okay, the number 1 is Appu gets some dash, and here we have two options. First one is tomato, and the number B is carrot seeds. Okay, so Appu gets some. We have to choose the options carefully. तो अप्पू क्या लाता है, क्या मतलब वो लाता है इस स्टोरी में, टमाटर या गाजर के बीज? तो वो क्या लाता है? बी नंबर, कैरेट सीड्स. नंबर 2, अप्पू गेट्स द सीड फ्रॉम अ dash. Number A, we have shop. Number B, we have
स्कूल. ओके. Appu gets the seed from a shop. जाहिर सी बात है बीज है तो वो स्कूल में तो मिलेगा नहीं, दुकान से मिला उसे, वो दुकान से खरीदने जाता है गाजर के बीज. नंबर 3. Dash will make halwa for the children. So who will make? Option A is Appu. Option B is grandma. So the answer is grandma. Now I will tell you the meaning of this, then I will solve the 4 and 5. Appu gets some dash. तो अप्पू क्या लाता है? गाजर के बीज. Appu gets the seed from a shop. अप्पू को वो गाजर के बीज कहाँ से खरीदता है? तो दुकान से. Grandma will make halwa for the children. सब लोगों के हलवा कौन बनाएंगी? तो दादी माँ. ओके. Number 4. The children dash carry the carrot home. Option A, Pom Pom and Appu. Option B, the children and the Pom Pom. The children and the Pom Pom. The answer is the number B. The children and the Pom Pom. तो गाजर को घर कौन लेके जाते हैं? बच्चे. और पॉम पॉम द मंकी. 5 नंबर. डैश शेयर द हलवा. ओके. Dash share the halwa. A number. All of them. And B, grandma and Appu. ओके. सो जो हलवा है वो कौन शेयर करते हैं? ऑल ऑफ देम, जो सब थे, या फिर सिर्फ ग्रैंडमा एंड अप्पू? तो आंसर इज ऑल ऑफ देम. The number 4 is the children and the pom pom carrying the carrot home. तो चिल्ड्रन और पॉम पॉम मिल के उस बड़े से गाजर को घर लेके जाते हैं हलवा बनवाने के लिए दादी से, और फिर वो सब लोग उसे शेयर करके खाते हैं. वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस फ्रॉम द स्टोरी. ओके. So what you have to do, you have to read the chapter once again, Appu and the carrot, and then do the question number A in your notebook. This is the homework from today's video. Till then, take care, be safe, and have a nice day. Thank you.